Hey guys, hit the subscribe button ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स as well as press the bell icon so you will never miss our next video. Thank you. Hello everyone, this is Arunima Mishra and in today's class we will gonna discuss about business economics. What is business economics? To understand business economics, we have to consider about three terms that are, first one is economic laws. What are economic laws? जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सालों साल रिसर्च करके कुछ लॉज बनाए, इकोनॉमिक मॉडल्स बनाए, हमें थ्योरीज दी. फॉर एग्जाम्पल theory of rent and wages, law of demand and supply. So these are all economic laws. Fine. Now the second term is business practices. Business practices. What is business practices? It's so simple. बिजनेस प्रैक्टिसेस जो डेली रूटीन में वर्क किया जाता है, जो बिजनेस चल रहा है, जिस बेसिस पे बिजनेस चलता है, दैट इज सिंपल बिजनेस प्रैक्टिसेस. नाउ जब इकोनॉमिक लॉज इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ, मींस जब हम इकोनॉमिक लॉज, हमारी जो मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनको जब हम हमारे बिजनेस में अप्लाई करते हैं, मींस जब आप उनको काम करने के लिए, जब आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बिजनेस के अंदर, देन इट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को एक पावर मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, एक हेल्प मिलती है इन इकोनॉमिक लॉज के थ्रू कि वो हमारे बिजनेस को किस तरह से आगे फर्दर रन करेंगे. डे टू डे बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डे टू डे डिसीजन मेकिंग होती है बिजनेस के अंदर. बिजनेस को रन करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर हर वक्त हर जगह डिसीजन लेने पड़ते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स बनती है, हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस competitive world. Then you have to use these laws in our business. That it's so simple that when we apply economic laws practically in our business, it becomes business economics. We can say that economic theory, when merged with business practices, then it will become business economics. It's so simple. It bridges the gap between the economic theory and applied economics. So this is all for today, and we will gonna discuss more about economics, and we will discuss on more important topics. So till then, bye bye and thank you for watching.